Everyone. Today's topic is dialog control and networks. So, for a secure communication or prior communication, there are two types of dialogues are used or user dialogues are there. These are long session oriented transaction and short transaction. Okay, session oriented transaction and short transaction. So, consider a situation you want to check a bank balance of your bank account. Now, there are two ways to get a bank balance. One is a prior step-by-step method that is nothing but go to your URL site, bank site URL, then enter account number, password, log in into your bank account, and then search for the balance inquiry and see the balance. Okay, this is a one way where you are going to perform the step-by-step operations, and the second option is just give the missed call on a given allotted number for your balance, and it will provide you the details regarding your balance. Okay, so there is a long way and there is a short way, the two types of transaction you can consider for a specific operation. Okay, so this is how the dialog control works. uh, Going to a particular page directly through an index can be considered as a short transaction, जिसमें आप लोग एक मोनोलिथिक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे कुछ अगर प्रोसेस करते हैं तो उसको बोलते हैं सेशन ओरिएंटेड. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लॉग्ड ऑन a specific site, then you are going to perform the number of steps, number of operations to achieve a specific target. Or another way is just give the uh, give the missed call for a for in a banking sector. If you want to check the balance, you just give the missed call. So it is called as a short transaction. Okay, so the session oriented and short transactions are two dialog controls. Two dialog user dialogues are there for a communication. Selection of this transaction mode will depend on the type of device we use. आप क्या यूज़ कर रहे हो और किस बेसिस पे है, कौन सा आप लोगों का डिवाइस है, उस बेसिस के ऊपर आप लोग ट्रांजैक्शन डिपेंड. इफ़ यू आर हैविंग अ मोबाइल यू जस्ट गिव अ मिस कॉल. इफ़ यू आर हैविंग अ लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम you just go for the long way process. Okay, so for a device with limited input output like SMS for instance, short transaction may be desired. Yes, अभी हम लोगों ने वही देखा कि अगर आपके पास अगर मोबाइल है जिसके अंदर लिमिटेड इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म्स है तो यू कैन यूज द एसएमएस सिस्टम फॉर ट्रांजैक्शन. सो जस्ट गेट अ कंसिडर द सिचुएशन ओवर हियर. इंटरनेट बैंकिंग थ्रू डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये एक पहला हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं. सो द फर्स्ट you have to perform the minimum dialogues. क्या क्या करने पड़ेंगे? First of all, enter the URL bank site, enter account number, password, and just logged in. Select the balance inquiry dialog and the see balance and log out from the internet banking. So this is the one example of your session oriented transaction, and using short transaction same objectives can be done, but here you can just provide the SMS, से माई बैलेंस whatever जो जैसे सर्विस होगी उस हिसाब से आप लोग उसको एसएमएस करेंगे माई बैलेंस करके, और यू जस्ट गिव द मिस कॉल फ्रॉम दैट गिवन नंबर. So you will get whatever the balance in your account, you just get it. So this is how the dialog control works. Okay, the next topic is networks. मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या क्या नेटवर्क्स होंगे, किस टाइप के नेटवर्क्स वी आर गोइंग टू यूज. So the mobile computing will use the different types of network, that is a fixed telephone network, GSM, GPRS, asynchronous transfer mode, frame relay is there, ISDN is there, CDMA, then DSL, digital subscriber line or loop, you can say that, dial-up connection, and wireless fidelity, Wi-Fi, 802.11, that is a wireless network, 802.11, Bluetooth, Ethernet, and broadband, etc. Okay, so some of these are the wired networks and some of these are having a wireless network. इसमें कुछ ऐसे नेटवर्क्स है जो एडॉक नेटवर्क होते हैं जो टेम्पररी के तौर पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. एडॉक मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए वो नेटवर्क एस्टेब्लिश किए जाते हैं.
So one by one we are going to see wireline network. It is also called as the network. These are the fixed network or wireline network. That is one kind of a telephone network जो हम लोग broadband use करते हैं. So broadband networks over DSL or cable will also part of wireline network. You know very well. So though microwave or satellite network do not use wired, when you use telephone network uses microwave or satellite as a part of its infrastructure. इसमें माइक्रोवेव और सैटेलाइट ये जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट रोल करेंगे बट इसमें वायर्ड का कोई कनेक्शन नहीं होगा. Okay, we are going to use the broadband system over a telephone network which is considered as a wireline network or wired network. Second network is a wireless in which there is no physical connection is established. We are going to use the various wireless network like AMPS, GPRS, wireless local loop network. These are the various different technologies which are part of a wireless network as well. In wireless network, other than the radio interface, rest of the network is wireline. Okay, radio signals जो एक specific वर्क स्टेशन या वर्क एरिया है वो उसको अगर छोड़ दे तो सब बाकी जो चीज़ें हैं वो वायर लाइन की तरह कंसिडर होती है और दे दिस इज जनरली कॉल्ड एज अ पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क जो पीएलएमएन हम लोग उसको कंसिडर करते हैं. ओके, सो वायरलेस नेटवर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क. नेक्स्ट वन इज द एडॉक नेटवर्क. एडॉक का मीनिंग होता है फॉर द पर्पज ओनली, फॉर दिस पर्पज ओनली. एक स्पेसिफिक टारगेट होगा उसके लिए आप लोगों को ये नेटवर्क एस्टेब्लिश किए जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो कि लोग ड्यूरेशन के लिए. ओके, वन विद द वायरलेस और टेम्पररी प्लग इन कनेक्शंस के साथ इसको वर्क किया जाता है. इन दिस नेटवर्क सम ऑफ द डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ओनली फॉर ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन. Yeah, as I told you, it is only for perform the specific purpose or to fulfill the specific target. So ad hoc network are generally used for a duration of communication. Ad hoc network is also formed when mobile or portable device operate in close proximity of each other with the rest of the network. ये जहाँ पर पोर्टेबल सिचुएशन या होगी या फिर डिवाइसेस के लिए या फिर मोबाइल सिस्टम्स होंगी वहाँ पर ये एडॉक नेटवर्क ज़्यादातर यूज किए जाते हैं. एग्जांपल इसका है पीडीए. पीडीए इज नथिंग बट द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो आपके लैपटॉप की तरह हैंडहेल्ड डिवाइसेस की तरह काम करते हैं. सो the term ad hoc has been applied to networks in which new devices can quickly added using, for example, ब्लूटूथ और वायरलेस लैन 802.11x मैंने अभी बताया. तो ये डिवाइसेस को हम लोगों को क्या है कि एक पर्पस के लिए हम लोग इसको एस्टैब्लिश करते हैं, इस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं. सो इन दिस नेटवर्क डिवाइसेस कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस यूजिंग वायरलेस ट्रांसमिशन. तो ये एक तरीके से वायरलेस ट्रांसमिशन भी कंसिडर कर सकते हैं जिसमें शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी के बेस पे ये काम करता है. ओके, तो ये हो गया आपका एड ऑफ नेटवर्क. नेक्स्ट इज द बियरर्स. Bearers are nothing but different types of transmission media. You can say that media, or you can say that protocol systems, where actually your connection will establish on the basis of the these bearers. The connection establishes. There are different type of transport bearer. This can be TCP/IP, connection oriented and connection-less TCP/IP. HTTP is there, protocols. Dial-up connection के लिए कुछ protocols होंगे. And for GSM, it could be used SNS, USST, that is unstructured supplementary service data, and wireless application protocol WAP. So these are the various different types of transport barriers. So today we have seen the uh, dialog control, short transaction, and session oriented transaction, and various